ইজি হবে তো। এক মিনিট দাঁড়া, কি বলছিস? नंबर 35, जिन लोगों को, जो लोग बाद में आया है उनको मैं भेज दूंगा, तुम लोग मुझे व्हाट्सएप में हाई करके लिखना सर दैट क्वेश्चन पेपर। मोस्टली मैंने भेज दिया है, अगर नहीं भेजा है तो मैं भेज दूंगा। A question is that a ball is dropped from a height, okay, it takes 0.2 second to cross the last 6 meter. So a ball is dropped and from some height, we don't know that height, but it is written it takes 0.2 second to cover across the last 6 meter. So this is my last 6 meter, which is covered by 0.2 second. Question is, what is the height from which the ball is dropped? So for motion in one dimension, basically we have these three popular formula. I think all of you know this three formula. V equals to U plus AT, S is UT plus half AT square, and V square equals to U square plus 2AS, and एक ये तीनों के साथ एक फ्री फॉर्मूला है SN, that is U plus A by 2 2n minus 1. This one is for the nth position, nth particle. अच्छा, यहाँ पे देखो, if these are in motion under gravity, so instead of acceleration we can use g. दूसरा बात है, जहां से मेरा मोशन शुरू हो रहा है, I can suppose it as my reference point. So if we suppose this as my reference point, it is better if we use in this way, that the upper motion is positive, lower one is negative, right side is positive, left side is negative. Now as we are in only motion in one dimension, so अभी के लिए फिलहाल ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे सिर्फ upward and downward चाहिए. कभी कभी you can use your presence of mind also, कि the lower one is you can take all positive, but मैं बोलूंगा कि it is better you can stick in a particular form, that is upper one is positive, lower one is negative. So see, this one is, let the velocity is you don't know, but you know the distance between from here to here, and you know the time also. So we can use here S is ut plus half at square. अब देखो, तुम चाहो तो नेगेटिव साइन नहीं लेके भी कर सकते हो, तुम चाहो तो इसको सिंपल भी कर सकते हो. आई जस्ट शो यू, दोनों चीज दिखाते हैं, तो देन यू अंडरस्टैंड कि एनीथिंग यू कैन डू आफ्टर यू नो ऑल ऑफ दिस प्रॉपरली, यू कैन यूज एनीथिंग. देखो, जैसे यहाँ से यहाँ आया, वी कैन यूज 6. सो मोशन अंडर ग्रेविटी, यू डोंट नो यू, तो -6 लेना पड़ेगा ना, उससे नीचे आ रहा है. अरे मैं दोनों ही दिखा रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ. हाफ, this is 10 into 0.2 square. You can use this one also because all are downward, so you can take all this negative. You can use this also. You can use -6 u into 0.2 plus half minus 10 into 0.2 square. ये लेना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि always we prefer just single one, that the downward is negative, upward is positive. You can use this one also. और जब तुम मैच्योर हो जाओगे तो छोटा छोटा बात के हम लोग नॉर्मल भी कर सकते हैं. देखो, यहाँ से यहाँ आया, इसका मालूम है, इसका पता करना है, ये डिस्टेंस मालूम है, ये टाइम मालूम है, तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकता है. यू गेट द सेम आंसर. आई जस्ट शो यू, यू गेट द सेम आंसर. हाफ, ये हो गया 5, ये हो गया 0.04. सो u into 0.2 plus 0.2 ना. So u into 0.2, that is 6 minus 0.2, that is 5.8. U is 5.8 by 0.2, that is 29 meter per second. This is the velocity here, 29 meter per second. Or you can use this also, you get the same answer. See, u into 0.2 minus 5 into 0.04, u into 0.2 minus 0.2, u into 0.2, that is minus 6 plus 0.2, that is minus 5.8.
u is minus 5.8 by 0.2, that is minus 29 meter per second. Only the difference is, what do you mean by negative sign? Negative means downward, because here we use the direction in negative direction, so you get the direction also negative, and here you normally use s is ut plus half it square, you get this one. So it is a very simple thing. Now if you know this velocity and this is velocity 0, you can find out this distance. You can easily find out v square equals to u square plus 2as. Okay, because here the problem is that here the all motions are downward, you can use directly. But if the motion is like this and then come downward, then it is better you prefer this one. Are you getting my point? What I want to say you? Yes. So that's why कि कभी ये वाला लो, कभी ये वाला ले सकते हो. इससे अच्छा है कि एक पर्टिकुलर लो जहाँ पे इनिशियली में भी तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट वंस यू अंडरस्टैंड then you can take anything. अब देखो यहाँ पे देखो, अब जैसे देखो मुझे ये सब में अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैं बहुत बार ले चुका हूँ. अब देखो फाइनल वेलोसिटी I know 29 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 into 10 into s is 29 स्क्वायर by 20, that is approximately 42 मीटर. अगर मैं यहाँ से भी करना चाहूँ, देखो v square equals to u square plus 2as, my final velocity is from this to माइनस 29 का स्क्वायर, मतलब 29 का स्क्वायर लिखो, माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इनिशियली 0 to minus 10 into s. Okay, so what do you mean by s? That is 29 का स्क्वायर by 2 into 10 with negative sign, that means minus 42 meter. What do you mean by minus? Ki you are moving downward, yes or no? Yes, sir. So कोई फर्क नहीं पड़ता है. So once you understand the logic, so then तो it's no problem कि whatever required, डायरेक्ट सीधा है, so सीधा नेगेटिव मत लेके भी करो. हाँ, अगर ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो प्लस नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगा के करो. हाँ, but the main thing is you can manage your time. That is the main thing. Clear everyone? Yes, sir. So this is 42 Sir, plus answer 6. will be 48 meters. 42 plus 6. So this Yes, is sir, 48. 48 meter is the answer. So this is my first question. If you want to take a screenshot, you can take it. After that, see the next question. Everyone done this one? Yes, sir. Yes, Now sir. the next question, question number 36. This is also a very lovely question. See, an elevator is descending with a uniform acceleration. An elevator is descending with an uniform acceleration. Descending मतलब नीचे की तरफ जा रहा है. With an uniform acceleration. ठीक है? To measure the acceleration, a person in the elevator drop a coin at the moment the elevator starts. The coin is 1 meter above the floor. इसके अंदर एक पर्सन है, इसने क्या किया, एक कॉइन को ड्रॉप किया. कहां से? 1 meter from the ground of the elevator. Okay. The coin is 1 meter above the floor of the elevator. At a time it is dropped. The person observed that the coin strike the floor in 1 second. तो ये पर्सन को लगा ये कॉइन यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड लगा, मतलब 1 meter डिस्टेंस ट्रेवल किया inside the elevator in 1 second. Is it clear, everyone? Yes, sir. Is it clear? Now the question is that from this data, find the acceleration of the elevator. क्या मस्त question है. So find from this data the acceleration of the elevator. Try. Oh. Acha. So I just want to read the question again. A stone is released from the top of a tower. The total distance covered by it in the last second, that is the last second. First thing it is released, so u0. The total distance traveled by it in the last second is of its motion is equal to the distance covered by it in the first 3 seconds. So S3, first 3 seconds of its motion. The
The stone remain in air means find the time taken by the stone to remain in air. Two students give the answer 5 seconds. So anyone tell me what is the answer? So let's see. First of all, in this question, it is given u is 0. So we can write Sn, that is 0 plus g by 2, 2n minus 1. Let n is the time, that is equals to ut, u is 0 plus half g t square. Now, t square, and t is what? N square. Last 3 seconds, sorry, my mistake. Last 3 seconds, so 3 square. Is it clear, everyone? Can we write in this way? Yes, sir. Yes, sir. Half gt square, g last 3 seconds, it is mentioned last 3. So I can write it t equals to 3. Now I can cancel this g by 2. So whatever be the value of g, it doesn't matter. 2n minus 1, that is equals to 9. 2n is equals to 10, n is equals to 5 seconds. Done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. After that, some questions from your NCERT book. These are very popular question of NCERT book. So as you're in the from 16, from 14, even in some school exams are started. So these questions are very, very important from NCERT book. NCERT book, some questions are very, very important. So you can try all these questions, like question number 44 also, same type of question. I already show you displacement time graph wala question. Chalo isko pehle hi kar deta hai. The question is that the position of an object moving along the x-axis is given by, first 44, huh? Position of an object moving along the x-axis is given by x equals to a plus bt square. This question is in from NCERT 3.2 example. Okay, where a is 8.5 and b is 2.5. Okay, and t is measured in second. What is its velocity when the t is 0 and 2 seconds? This is the first question. What is the average velocity between t equals to 2 seconds and t equals to 4 seconds? Everyone, you understand the question? This is the displacement time graph. X equals to a plus bt square. A is 8.5, b is 2.5. Question is that find the instantaneous velocity when the time is 0 second and time is 2 second. So to find out the velocity, we have to differentiate this. Anyone? I think you all know 0 plus 2 bt. Yes or no? Yes, sir. So now 2 into b is how much? 2.5 t. So you can directly write 5t. Now when the time is 0, my velocity is 5 into 0, that is 0. When the time is 2 seconds, my velocity is 5 into 2, that is 10 meter per second. First part done. Now the second part. Average velocity. Anyone tell me for average velocity, how can we do that? Anyone? So 2v1 v2 No, listen. You can solve it by two methods. One, distance travel in 4 seconds minus distance travel in 2 seconds by 4 minus 2. You remember average velocity always final displacement minus initial displacement by final time minus initial time. Yes or no? yes, sir. With this, you have one more formula, that is you apply only when
your acceleration is constant. When your acceleration is constant, you can use average velocity, that is u plus v by 2. Now, first of all, let me check that this equation is constant acceleration equation or not. So how you check it? Acceleration dv by dt, that is 5t. If you differentiate this, you have 5. Yes or no? That is constant. Yes, sir. So as the acceleration is constant, I can show you from the both method, you get the same answer. So for that, you have to find the velocity at 2 seconds. Velocity at 2 seconds is how much? Velocity at 2 seconds is 10 meters per second. 1 minute. And and velocity at 4 seconds. क्या होगा? क्या होगा बोलो? 5 into 4. 20 How meters much? per second. 20. 20. So I can use it 10 plus 20 by 2. What is the answer? 15, na? 15. 15. And I can show you the same answer you get from this one also. So for that, you have to find out distance at 2 seconds. That is A is 8.5 plus B is 2.5 into 2 square. So 8.5 plus 4 और 2.5 कितना हो गया? 10. That is 18.5. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, And sir. what is the distance in 4 seconds? 8.5 plus 2.5 into 4 ka square. That is 8.5 plus 2.5 into 16. तो कितना हो जाएगा रे? 5 5 5 10 10 20 30 40 40 ना? 8.5 plus 40. Is it okay, everyone? Yes, so sir. 48.5. Now, if we put it here, 48.5 minus 18.5 divided by 2, na? So, कितना आया? यहाँ से आएगा 30. देखा? एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं Yes, अपना sir. दे सकता हूँ. You understand? So this is the very easy method. You can get it very easily. देखो इसके respect में काफी जल्दी आया. But with the condition, you can use only when your acceleration is constant. If your acceleration is constant, you can use this one also for average velocity. Otherwise, if the acceleration is not constant, then you never get this answer. Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is also your NCERT question. Next NCERT question. These are very popular NCERT question. So I just show you them so you can understand them in better way. Sir, Hmm. सर हम एक बार लीव करके रिजॉइन करें. हाँ हाँ इससे अच्छा बात है क्या हो सकता है. Question number 46. See, the question is that a woman starts from her home at 9 a.m. सुबह 9 बजे 9 a.m. start from his home. Okay, walks with a speed of 5 kilometers per hour. Walks with a speed of 5 kilometers per hour. Okay, walks with a speed of 5 kilometers per hour on a straight road up to her office 2.5 kilometers away. ये क्वेश्चन कराए थे क्या? Hello? No, sir. No, sir. Acha. So the distance is 2.5 kilometers. These are very important question from NCERT. मुझे लगा करवा देना चाहिए. 2.5 kilometers away from his office. Stay at the office up to 5 p.m. Stay at the office up to 5 p.m. Okay. ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये क्वेश्चन नंबर 46 है और NCERT का 3.3. ठीक है. A woman starts from her home at 9 a.m. walks
walks with a speed of 5 km per hour on a state road up to her office 2.5 km away. Stay at the office up to 5 p.m. Okay, and return by an auto with a speed of 25 km and return by an auto with a speed of kitna 25 km per hour. Choose suitable scale and plot displacement time graph for her motion. So see how easy these questions are. First of all, from home to office 2.5 kilometer 5 km per hour, and the distance is 2.5. How much time it will take? 2.5 kilometer is the distance, and with the speed of 5 km per hour. Anyone, how much time? Half hour, yes or no? Half an hour. That Sir, is 60 minutes, 30 minutes. 30 minutes. Very good. Now, when she returned home, from the office, distance तो वही रहेगा 2.5 Yes, kilometer, sir. but now she took a auto 25 km per hour. So ये क्या हो जाएगा? 1/10 hour, yes or no? Yes, sir. 1/10 hour का मतलब क्या हो गया? 6 minutes, yes or no? Yes. Yes, मतलब 5:06 में वो घर पे पहुंच जाएगा. तो ये स्टार्ट करेगा यहाँ से. This is, you can write 9 AM, yes or no? yes, In terms of time. So ये गया ऑफिस पहुंच गया. कितना बजे? 9:30. And that distance is 2.5 kilometer. ना फिर यहाँ से distance constant, displacement constant, because she is in the office कब तक? 5 p.m. Understand? Yes, sir. And now take a auto and return to the home. कितना बजे? 5:06 p.m. Yes or no? Yes, sir. So you understand the question? Yes, sir. These are very simple question, but you have to draw this graph. You have to write them properly, okay? Because ये सब क्वेश्चंस का स्कूल में देने का चांसेस बहुत ज्यादा है. तो हम लोग एंट्रेंस के साथ साथ स्कूल का भी तो रिजल्ट अच्छा करना है ना. पता चला एंट्रेंस स्लीपर है, स्कूल का रिजल्ट सोचा ही नहीं, फिर झमेला हो जाएगा. ठीक है? ओके एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Next question. Recording is on, na? Yes, sir. Next question. This is also a very popular question. Question number 47 from my sheet, and in NCERT 3.4 exercise. Very popular question. A drunkard walk in a narrow lane. A drunkard walk in a narrow lane. एकदम छोटा सा रास्ता है. ठीक है? A drunkard walk in a narrow lane takes 5 steps forward. 1 step, 2 steps, 3 steps, 4 steps, 5 steps. 5 steps forward and 3 steps backward. फिर 1 step, 2 step, 3 step. यहाँ पे आ गया. 5 steps forward and 3 steps backward. Forward again by 5 steps and backward 3 steps backward, and so on. मतलब हर बार ये क्या कर रहा है? 5 step forward जा रहा है, 3 step backward आ रहा है. 5 step forward जा रहा है, 3 step backward आ रहा है. 5 step forward जा रहा है, 3 step backward आ रहा है. Is it clear, everyone? Yes, sir. Each step 1 meter long. Each step 1 meter long and requires 1 second. एक स्टेप में 1 मीटर लॉन्ग है और एक स्टेप को क्रॉस, एक स्टेप के लिए 1 सेकेंड टाइम लग रहा है. ठीक है? 1 सेकेंड. Plot a displacement time graph of his motion. Determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit. यहाँ पे दूर में एक pit है, which is 13 meter from the, which is 13 meters, sorry, which is 13 meter from the starting point.
Determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meters away from the start. So this is my start point. So time, how much time it will take to fall into the pit? कब किया? जब हम लोग वो सम कर रहे थे तो ग्राफ को दिखाया था कि उसके बाद किया था कि पहले किया था? तो शायद नहीं दिखाया ग्राफ। हाँ सर छोड़ो। अच्छा क्या, हाँ जो मैं बोलने वाला था कि तुम लोगों को जो मैंने जो डिराइवेशन का जो हैंड रिटन नोट्स भेजा है ना, मे बी उसमें ये सब क्वेश्चंस मेरा सॉल्व किया नहीं हुआ है. सो बिकॉज आई सेंड यू द शीट ऑल्सो, सो इट्स बेटर यू कैन प्रैक्टिस इट वंस. ओके, दैट्स व्हाई मैंने उस शीट में ज्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके नहीं दिखाया है. ठीक है मेरा बात? मैंने क्या बोला समझा? यस सर, मतलब वही ना जो आप शीट भेजे उसमें से सम सॉल्व करना. हाँ, जो मैंने वो जो तुम लोगों को जो हैंड रिटन नोट्स मिला ना, होमवर्क है, जो भी क्लास में पढ़ाई हुआ है, उसमें जितना क्वेश्चन है मैंने सब क्वेश्चंस को नहीं किया है, क्योंकि एटलीस्ट तुम लोग एक बार करोगे, शीट तुम्हारा पास है, ठीक है ना? सो यू कैन ट्राई देम एंड यू कैन, वीडियो भी है, वीडियो देख के क्वेश्चन नंबर नोट करके यू कैन ट्राई देम आल्सो. ओके, यस मैं शायद एक दो करके क्वेश्चन दिखाया है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखाया है वहां पे. यही कारण है, क्योंकि पहला बात है नोट बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक ही चीज को मैं कितना बार कराऊंगा. सो क्वेश्चन नंबर 55. Yes, that is also a very important question. A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 kilometer. Home to a market. The distance between the home, दोनों देखने में एक ही जैसा लग रहा है, यही मेरा प्रॉब्लम है. हाँ, home and market, the distance is 2.5 kilometer. Now see, away with a speed of 5 kilometer per hour. With a speed of 5 kilometer per hour. With a speed of 5 kilometer per hour. Finding the market close. Finding the market close. यहाँ पे आके देखा market जो है close है. He instantly returned and walked back home at a speed of. He instantly returned and walked back at a speed of 7.5 kilometer per hour. Okay, so find two things. One is magnitude of velocity. Number two, speed. एक number for the interval 0 to 30 minute के लिए. Number two, 0 to 50 minute के लिए. Number three, 0 to 40 minute के लिए. Okay, everyone, you understand the question? तो पहला वाला हो गया. You all understand the question, na? Yes sir. Try this question. Yes sir. See, it's a very simple question. सर Okay. पहला वाला तो 0 होगा. सुनो ना, नहीं पहला वाला 0 कैसे होगा? It's a very simple question, and in this question you have two questions: magnitude of velocity and number two, speed. And here you have three parts. One is 0 to 30 minute, 0 to 50 minute, 0 to 40 minute. So basically यहाँ पे 6 question है, ठीक है? तो ये इसको start करने से पहले the best way is, सबसे पहले क्या करो, देखो यहाँ से जो ये गया 2.5 किलोमीटर, कितना टाइम लगा? टाइम 1. तुम लोग लिखोगे टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम होम टू मार्केट, ये लिख दो, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम होम टू मार्केट. अब देखो डिस्टेंस क्या है? 2.5 किलोमीटर. हाँ, टाइम स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर. सो कितना टाइम लगा? 30 minutes. मतलब 30 मिनट. Yes. फिर जब रिटर्न आया, 20 minutes. टाइम टेकन टू रिटर्न फ्रॉम मार्केट टू होम 2.5 kilometer by 7.5 kilometer per hour, that is 1/3 hour, that is 20 minutes.
तुम्हें ये दोनों चीज मिल गया। अब हम लिखना है, देखो फर्स्ट वन कि फॉर 0 to 30 मिनट, सर नंबर 5 वन है। magnitude of velocity। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी का डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द पार्टिकल बाय द टाइम। तो यहाँ से यहाँ गया, आया नहीं अभी तक, 30 में रिटर्न नहीं आया, 30 में यहाँ पे पहुंचा है ना, 0 से 30 में यहाँ पे पहुंचा। सो डिस्प्लेसमेंट इज 2.5, सो डिस्प्लेसमेंट इज 2.5 एंड द टाइम इज हाफ एन आवर। सो क्या हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर। What is the number 2? What is the speed? सर 6 किलोमीटर पर It आवर। also 2.5 kilometer by half an hour. That is 5 kilometer per hour. Clear everyone? First part. Everyone, is it okay? Yes, sir. So for the first part 0 to 30 minute, देखो distance and displacement same है, तो magnitude of velocity and speed same है। Now the second one, 0 to 50 minute। तो 0 to 50 मिनट ये गया, 0 to 50 मिनट ये गया और वापस भी आया, ये सब नो। देखो 30 + 20, 50 मिनट में वो गया, इंस्टेंटली बैक करके आया। Yes, sir. 30 मिनट एंड यहाँ पे 20 मिनट, टोटल 50 मिनट, ये Yes, सब sir. नो। सो इन दिस 50 मिनट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। टाइम कितना है? 50 मिनट, मतलब 5/6 आवर। तो 0 के कुछ से भी डिवाइड करो, आंसर 0 ही होगा। ये सर नो? सर एक डाउट है। Yes, sir. हाँ बोलो। सर तो पहला वाला में 0 क्यों नहीं हुआ? पहला वाला तो यहाँ से यहाँ गया 30 मिनट में, तो ये गया, रिटर्न कहाँ आया? दूसरा वाला में तो रिटर्न आया, अभी यहाँ और यहाँ, समझा? हाँ सर। नाउ द सेकंड पार्ट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत सुंदर से लिखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। सबको सब कुछ आता है लेकिन कंफ्यूजन होके उल्टा पुल्टा कर देता है। 0 to 50 मिनट टोटल स्पीड। स्पीड में देखो क्या है, गया और आया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? Sir, 5 kilometers. 5 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, गया और आया। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय 5 किलोमीटर। कंफ्यूजन है तो ऐसे करके लिख लो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और नीचे में क्या होगा? 50 मिनट 5/6. मतलब 5/6 आवर। सो ये क्या हो गया? 5 Sir, किलोमीटर 6 kil. by 5/6 hour, that is 6 kilometer 6 kilometer per hour. per hour. Now the third one, 0 to 40 minute। देखो 0 to 40 मिनट का मतलब क्या है कि 0 to 40 मिनट का मतलब है, 0 to 40 मिनट का मतलब है ये गया 30 मिनट, ये गया 30 मिनट और ये गया 30 मिनट, और फिर यहाँ से 10 मिनट, 10 मिनट में आधा आएगा, ये सुन लो। Yes, sir. यस सर। कि आने में 20 मिनट लगा था, 20 का हाफ होता है 10 मिनट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, दिस इज माय फाइनल पॉइंट। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 2.5 का आधा कितना होता है? 1.25। तो माय डिस्प्लेसमेंट इज 1.25 किलोमीटर, ये सुन लो। यस सर। So my third one, 0 to 20, my magnitude of velocity, that is कितना होगा? 1.25 by 40 मिनट, मतलब 40/60 ना, माने 2/3 आवर, ये सुन लो। Yes, sir. तो ये क्या हो गया? 3.75 by 2 किलोमीटर पर आवर। यू कैन कैलकुलेट दिस, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। नंबर टू में देखो डिस्टेंस 2.5 1.25 कितना हुआ? 2.5 + 1.25
कितना हुआ? 3.75. तो स्पीड में हम लोग लिखेंगे 3.75 बाई 40 मिनट, मतलब 40 बाई 60, दैट मीन्स 2 बाई 3 आवर. सो ये क्या हो गया? 75, मतलब देर. 75 इंटू 3 कितना होता है? 225. हाँ, 225. 11.25. 11.25 बाई 2 किलोमीटर पर So आवर. 5.6 kilometer per hour. जो भी हो, समझ में आ गया ना? Yes sir. 5.6 तब नहीं होगा, 5.65 होगा. 5.625 है तो 5.6. हाँ, 5.6. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है. बहुत अच्छा कैलकुलेशन है. चलो, खुश हुआ मैं. डन डन डन. यस मेरा सर. बाल कितना सुंदर काटा है, तुम लोग कुछ बोला नहीं, देखा? सर हम सोचे थे पहले बोलने का, लेकिन आज गया, वो लोग मुझे पूरा एकदम बोला कि एकदम, बोला छोटा कर दो, क्या कर दिया, इधर से चला दिया ट्रिमर, उधर से ट्रिमर चला दिया. Okay, so now the last question for today, and that question is also very important. This is also from the NCERT book, question number 66 from NCERT book 3.27. तो फिर ये अगर हो गया, from the next class we start क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, we can start motion in 2 dimension, you can say. ठीक है, यहाँ पे भी कुछ मोशन इन 2 डायमेंशन का क्वेश्चंस है, तो मैं बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी में चला जाऊंगा. फिर ये 2 डायमेंशन में जाने के बाद ये सब क्वेश्चंस कराएंगे. यहाँ पे देखना 67, 68 दीज आर मोशन इन 2 डायमेंशन, तो हम वहीं पे करेंगे. ठीक है. सो 3.7 NCERT. So the question is that, a lovely question is there. You all try this question. Okay. The question is like this. Question is there, the speed time graph of a particle along a fixed direction is shown in the figure. Obtain the distance traveled by the particle. Number 1, distance travel, travel by the particle. Number 1, between time 0 second to 10 second. This is the first question. Second question, between 2 second to 6 second. So distance travel from 0 to 10 second, distance travel from 2 to 6 second, and then what is the average speed of the particle over the interval in A and B. That means तुम्हें दोनों केस में, when you get the distance from 0 to 10 second, you have to find out the average speed. You have to find out the average speed, for this one as well as this one. So very simple. Once you find out the distance, divided by 10 divided by 4, you get the speed. So speed is not a very tough thing. The main thing is you have to find out the distance traveled by the particle 0 to 10 second and 2 to 6 second. Given this is 0, this is 5, this is given 10, this is given 12 meter per second. Okay. The speed time graph of a particle obtain the निकल गया 0 to 10 सेकंड. हाँ? सर 0 to 10 सेकंड निकल गया. दोनों निकालो ना, कोई हड़बड़ी नहीं है. 60. हाँ सर. हाँ 60 है. देखो तुम इसको बेस्ट प्रोसेस यू कैन ट्राई इट बाय द ग्राफिकल मेथड. सो ग्राफिकल मेथड में आंसर करना सबसे आसान है. सो हाफ द बेस इज 10 and the height is 12, that is 60 meters. Very good. Now second के लिए देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 2 सेकेंड में और 6 सेकेंड में मुझे वेलोसिटी चाहिए. तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? मेरे पास हजारों मेथड है. देखो मुझे फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है. सो आई कैन फाइंड आउट द एक्सीलरेशन. 12 minus 0 by 5. So क्या आया? 2 point कितना आएगा? 2.4 ना, 2.4 मीटर पर सेकेंड. और अगर मैं रिटार्डेशन निकालना चाहूँ, देखो ये मेरा फाइनल है, ये मेरा इनिशियल है, ये भी उतना ही आएगा. 0 minus 12 by 5,
that is minus 2.4 meter per second square. Sorry, square hoga. So you get the acceleration as well as retardation, yes or no? Yes, sir. So you know the initial velocity, you know the acceleration, you know the time. So velocity निकालना बहुत बड़ा बात नहीं है. 0 plus 2.4 into 2, that is 4.8 meter per second. So यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 4.8 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे देखो मुझे फाइनल वेलोसिटी मालूम है 12, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है 12, फाइनल वेलोसिटी करना है आफ्टर 5 सेकेंड मैंने 1 सेकेंड के लिए. सो v इक्वल्स टू u प्लस 80 अगर लगाएंगे, माय इनिशियल वेलोसिटी इज 12, रिटार्डेशन इज 2.4. रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ. टाइम इज 1 सेकेंड. सो 12 माइनस 2.4, दैट इज क्या आएगा? 9.6 और 9.6. 9.6. So, अब जब 9.6 आया, अब मैं क्या करूंगा यहाँ से देखो, मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस को और ये वाला डिस्टेंस को मैं हटा दूंगा, है ना? हाँ सर. तभी मैं वर्षाली, आशीष, है सर. बुझते पारছিস तो? है सर. So we have to find out this distance. So best way is that you find out these two displacement. So this is, see how easily we can find out half 2 into 4.8. So we get 4.8 meters na. And for this one, half 9.6 into 4 na. It a 4 na. This one is 4. So what we have 9.6 into 2. तो कितना होगा? 9 9 18 19, 19.2 मीटर. yes or no? Yes. Now Yes, sir. I can say so the distance travel in 2 to 6 seconds, that is total distance 60 meter minus 4.8 plus 19.2, 36 meter. that is 36 meter. मुझे पहला दोनों मिल गया. तो अब जब मुझे पहला दोनों मिल गया, so now I can easily find out, now I can easily find out the first one का average speed, that is 60 by 10, that is 6 meter per second, and दूसरा वाला 9 meter per second होगा. is 36 by 4, that is 9 meter per second. So you can easily solve this one by using the graphical method. अगर तुम इसको ग्राफिकल मेथड में नहीं करना चाहता, अगर तुम बोलोगे सर अगर हम ग्राफिकल मेथड में नहीं करना चाहे तो भी तुम कर सकते हो, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा. आई जस्ट शो यू कि क्यों मैंने ऐसा बोल रहा हूँ कि ज्यादा टाइम लगेगा थोड़ा सा. सर वो फॉर्मूला लगा के फिर हाँ, बार बार सबका अलग करके निकालना पड़ेगा. सो हाँ, तो इसके लिए देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस का बात करें तो हम कैसे निकालेंगे कि हम करेंगे ये वाला अलग से डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला अलग से डिस्टेंस निकालेंगे. सो वी नो द फाइनल वेलोसिटी, वी नो द इनिशियल वेलोसिटी. वी कैन यूज v square equals to s is ut plus half it square. ये भी कर सकते हो ना, as is, चलो v square equals to u square plus 2as से भी आएगा 2as. फाइनल वेलोसिटी is 12 square, इनिशियल 0, 2 into acceleration is कितना 2.4 ना. हाँ सर. s, so s is 12 square by 2 into 2.4. समझ में आ रहा है? देखो it takes more time ना. Similarly और कोई मेथड है? s is ut plus half it square. हाँ सर, वो s equals to ut plus half it square. ज्यादा आसानी से हो जाएगा ना. ut u is 0 into t is कितना 5 plus half 2.4 into 5 का स्क्वायर. ये ज्यादा आसान है. तो 1.2 into 25 कितना आएगा? ये 30 आएगा ना. and this is the first one. Second one is also
12 into 5 plus half minus 2.5 into 5 square. तो 5 बारह 60 minus 30, तो 30 मीटर ना. So S1 plus S2 that is 60. plus 30 that is 60 मीटर. आया. अब फिर तुम्हें वही acceleration retardation निकालना पड़ेगा. So acceleration is 12 minus 0 by 5 that is 2.4 meter per second square. And यहाँ पे ये भी दिखाना पड़ेगा 12 by 5 that is minus 2.4 meter per second square. अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये वेलोसिटी चाहिए, या तुम अगर वेलोसिटी नहीं लिखना चाहते हो तो तुम इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, या ये वेलोसिटी निकालो पहले. v इक्वल्स टू u plus 80, 0 plus 2.4 into 2 that is 4.8 meter per second. So this is my initial, this is my final. So you can use v square, या ऐसे भी निकाल सकते हो. s is 4.8 into ये 2 से 5 कितना सेकंड हो गया, 3 सेकंड ना. 3 plus half 2.4 into 3 square ना. तो 4.8 into 3 plus 1.2 into 9. समझ में आ रहा है ना कितना, देखो ज्यादा टाइम लग रहा है. Complicated. फिर यहाँ से यहाँ तक. So फिर the next distance that is initial is 12 into 1 plus half minus 2 into 2.4 into 1 का square. तब फिर ये दोनों को ऐड करोगे तो you get 36 and then divide it. So my suggestion is when if this question is given, क्योंकि ये क्वेश्चन देने का बहुत ज्यादा चांस है, बेस्ट है ये दोनों एरिया निकाल लो और ये दोनों एरिया निकाल के माइनस कर दो टोटल से. और इसके लिए एक्सीलरेशन यहाँ पे होगा 0 to 2 सेकंड 4.8 और फाइनल ये आफ्टर 1 सेकंड, मतलब 12 माइनस दिस 9.6 करो, ये दोनों का एरिया निकाल के माइनस करो. तुम चाहो तो ये दोनों का ट्रेपेजियम करके भी निकाल सकते हो, तो ट्रेपेजियम से भी ये ज्यादा आसान हो गया है ना. हाँ देखो सर. अगर हम ट्रेपेजियम, हाँ हम ट्रेपेजियम करके भी निकाल सकते थे. ट्रेपेजियम करके भी तुम्हारा सेम ही आंसर आएगा. देखो ट्रेपेजियम में भी तुमको 2 ट्रेपेजियम ही निकालना है, तो इसमें करना पड़ेगा हाफ 4.8 plus 12 into this 3 plus half 12 plus 9.6 into 1. ये दोनों को ऐड करने से तुम्हें कितना आना चाहिए, 36 आया था ना. तो ये कितना होगा 12 16 16.8 by 2 into 3 plus 19 21 ना. Sir, 25 by 2. 21 तो 25 by 2 आएगा इसमें. by 2 यही होगा ना. अरे 12 plus 9 कितना होता है, ठीक ही तो है, ठीक है ना. हाँ तो ये कितना होगा 8.4 into 3 plus ये कितना हो गया 10.6. तो ये हो जाएगा 4 8 3 4 12. नहीं आया ना, क्यों नहीं आया, 5 6 6. ओ तो ये मेरा 25.2 आ रहा है ये पूरा. कुछ नहीं आएगा, सेम आएगा. 4 8 12 9 4 12 12 के 13 13.2 10.8 कितना आया. नहीं आया क्यों नहीं रे, गड़बड़ किया है कुछ, रुको तो. समझ में आ रहा है ना, ये काफी ज्यादा टाइम लग जाता है. चलो वो ग्राफ वाला ही ठीक है. हाँ नहीं ये भी तो ग्राफ ही है. ये मतलब वो हो गया triangle है. 4.8 plus 12 and the separation is 3. तो ये आ क्यों नहीं रहा है, ये आएगा 12 16 by 8 by 2 into 3 प्लस यहाँ पे 12 plus सर मेरा 9 25.2 आ रहा है. half sum 21.6 by 2. तो ये हो गया 8 ना 8.4
इंटू 3 प्लस ये हो गया 10 10.8 तो 8 16 4 8 3 4 12 2 हाथ रइलो 1 8 24 25 आ गया तो 25.2 10.8 दैट इज 36 मीटर आया ना हाँ सर। सर तो हम वही तो बोल रहे थे 25.2 है। हाँ but with respect to that the initial one is much easier so we can try हाँ, sir. that okay I'm pausing the